Recording in progress. হ্যাঁ জল দিয়ে যাও, জল। দাঁড়া দিচ্ছি। ডুপ্লিকেটের বোতলটা কোথায় গেল? দাঁড়া। এখানে নেই, ওই ঘরে। Good morning. Good morning, everyone. So, today we're going to start modal verbs. ठीक है, modal verbs start करेंगे हम. So, we can start with can today. ठीक है, आज can से start करना है. Let me share my screen. Okay, so you can see modal verb can. So there are many kind of modal verb, as you can see, that can, could, may, might, या फिर would है, should है. These all are modal verbs, and these all verbs have different kind of uses in English, right? So one modal verb can be used in different ways. So first of all, today we are going to learn about can. So where to use can? In case of ability, permission, request, possibility, offering help, opportunity, and prohibition and inability. In all cases, we can use can. First one you can see ability. So, example, the most common use of modal verb can is to talk about the ability of a person in the present or in the future. कोई भी person का जो ability मतलब कुछ करने की क्षमता, वो जो है वो प्रेजेंट में हो चाहे या फिर फ्यूचर में हो, दोनों जगह ही हम यूज कर सकते हैं कैन, राइट? जैसे कि शी कैन विन द कंपटीशन, दैट मीन्स शी हैज द एबिलिटी टू विन द कंपटीशन. ठीक है. मोनू कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, दैट मीन्स मोनू हैज द मोनू हैज द एबिलिटी टू
speak many languages. So that is called use of can. He can fight. He has the ability to fight. Right? Now, could, ये जो नीचे लिखा है वो राइट नाउ वी डोंट हैव टू लुक इट, जब हम कुड करेंगे जिस दिन उस दिन ये कर लेंगे. नाउ तो हमने देखा कि एबिलिटी में हम यूज कर रहे हैं कैन. नेक्स्ट वी कैन गो फॉर परमिशन. कोई भी अगर आप किसी से परमिशन, आप किसी को परमिशन दे रहे हो या फिर किसी से परमिशन ले रहे हो. फॉर एग्जाम्पल गिविंग परमिशन, यू कैन कम इन. आप अंदर आ सकते हो, यू कैन कम इन. अच्छा. यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड्स ऑन द ट्रिप. आप ले सकते हो अपने फ्रेंड्स को ट्रिप में ले सकते हो. दैट इज गिविंग परमिशन. आप किसी को परमिशन दे रहे हो. एंड टेकिंग परमिशन मीन्स आप किसी से परमिशन ले रहे हो. ठीक है. कैन आई डेट योर सिस्टर, कैन आई यूज योर लैपटॉप, तो आप ये पूछ रहे हो. तो इन केस ऑफ गिविंग परमिशन, इन केस ऑफ टेकिंग परमिशन, दोनों केसेस में ही आप कैन का यूज कर सकते हो. नेक्स्ट रिक्वेस्ट. अगर किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कुछ, दैट कैन आई हैव वाटर, कैन यू टेक माई मदर टू द डेंटिस्ट, कैन यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क. तो ये आप रिक्वेस्ट के लिए कुछ पूछ रहे हो. मीन्स रिक्वेस्ट करके कुछ हेल्प के लिए पूछ रहे हो. कैन यू सी इफ आई हैव समथिंग इन माई आईज. तो ऐसे करके यू कैन इजीली आस्क. पॉसिबिलिटीज, कोई भी पॉसिबिलिटीज को आप जब बोलना चाहते हो, जैसे कि बीटिंग हिम इन बॉक्सिंग कैन बी डिफिकल्ट, हो सकता है वो डिफिकल्ट हो, तो दैट मीन्स दैट इज पॉसिबिलिटी. ईटिंग दिस प्लांट कैन किल यू, so that is also possibility. Learning English can be difficult for some people. तो ये सारे क्या है, ये possibilities आप बोल रहे हो. Living with him can be a challenging thing. उसके साथ रहना एक challenging thing हो सकता है. तो you are talking about all the possibilities. There you can use can. ऑफरिंग हेल्प, किसको आप हेल्प ऑफर कर रहे हो. कैन आई ड्रॉप यू समवेयर, क्या मैं आपको कहीं पे छोड़ दूं, या फिर कैन वी डू समथिंग फॉर यू, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं. कैन वी टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस, क्या मैं आपके एक्सपेंसेस का, आपका खर्चा उठा सकती हूँ. तो दिस ऑल आर ऑफरिंग हेल्प. अपॉर्चुनिटी, जब भी आप कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हो, जैसे यू कैन स्टिल गेट मैरिड, इट्स नॉट टू लेट. दैट मीन्स यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट मैरिड नाउ ऑल्सो. They are looking for an English teacher, so you can apply for the post. That means you are talking about the opportunity, that you have the opportunity, you can apply for the post. So, in case of opportunity, also we are using can. Now, use of cannot, that is prohibition or not allowed. दैट मीन्स यू कांट प्रमोट योर प्रोडक्ट्स है. प्रोहिबिशन मतलब जो रोक बाहर से लगाई गई है आपके ऊपर. यू कैन नॉट प्रमोट योर प्रोडक्ट्स है, आप अपना प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रमोट नहीं कर सकते, तो वो बाहर से रोक लगाई गई है. वहां पे भी आप कैन नॉट यूज कर सकते हो. एंड यू कैन नॉट यूज द ऑफिस एसेट्स फॉर पर्सनल यूज. आप ऑफिस एसेट को पर्सनली यूज नहीं कर सकते. तो दैट इज ऑल्सो बाहर से रोक लगाई है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिशन. नॉट अलाउड मतलब आप वो करने के लिए अलाउड नहीं हो, राइट. सो इफ यू आर सेइंग यू कांट यूज द असेट फॉर पर्सनल यूज, दैट मीन्स वो आप बोल रहे हो दैट यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट. ठीक है. एंड नॉट एबल टू डू समथिंग, वहां पे भी कर सकते हो कि मैं नहीं कर सकती. वी कांट वॉक ऑन वाटर, मैं नहीं चल सकती. शी कांट कुक, वो कुक नहीं कर सकती. सो वेन एवर यू हैव एबिलिटी, at that time you need to use can. If you don't have ability, you need to use cannot there. And in case of prohibition, or if you are not allowed to do anything, at that time also we are using can't. Okay, so that's all about can. Now, whatever situation you have seen here, so without can, we can use many things, right. Many modal verbs are here. Many verbs are there which can be used in place of can, as you know. But generally, today we are learning only about can. That's why I'm not telling about anything else. And can, you need to remember one thing, that can be used only in case of informal situation. Informal means whenever you are talking with your friends or maybe family or colleague, not colleague, friends, family, or any close person, at that time only you can use can.
Okay, with your colleagues or for informal situation, you should not use can. So at that time, what you need to use, we can discuss in next class. Today, do you have any kind of doubt regarding can? If you have, you can ask. Anyone has any doubt? Ma'am, can be is the modal verb. Hmm? Can be, can have. Yeah, that is past modal. Yes, ma'am. Hmm. For example, it can be, that is you are changing into either passive voice or you are making it in past. जैसे for example, this can be done, right? ये हो सकता है. ये Yes, किया ma'am. जा सकता है. This can be done. That is also modal. Modal verb means see, that is kind of auxiliary or helping verb. That is not main verb, right? For example, if I'm saying that you can speak English, so that means can is helping verb. We are using at modal verb and speak that is main verb. Okay, Ma'am, the pronunciation of cannot, can't, ma'am. can't is the contraction of cannot. For Ah, example, do not the pro- condone can't. Yeah, can't. pronunciation, ma'am. Pronunciation is can't. Yes, I Can't, yeah. not cannot. Cannot is the full form, and Full form. is the contraction of Shortcut. cannot. Yeah, short form we can say. Oh, okay, ma'am. For example, don't do not ka don't hai, Ah, yes, ma'am. Yes, ma'am. will not, won't, like that. Ah, yes. Okay, so let me give a topic, right? I need to give you a topic, or did I give any topic in this class? Previous class में कोई topic था? Economy. Okay, today we can discuss an interesting topic. I'm giving you on chat. ठीक है. Little bit. That is our topic. Do you believe in ghosts? And share your experience if you have any. भूत. अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपने कुछ देखा है चुड़ैल वुड़ैल, तो बोल सकता है. अदर देन मी, मेरे अलावा अगर कोई किसी को देखा है तो आप बोल सकते हो. यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस. Yes, ma'am. I believe in ghosts. You have seen? Okay, switch on your camera then. Wait for me. Yes. Okay, no issue. Do you believe in ghosts? Or if you don't have any experience, you can just share your opinion about it. That I have experience as well. you have experience. Oh my God. Few years ago, Hmm. I have taken my admission in diploma at Dr. D.Y. Patil Polytechnic, Kolhapur. Uh, that time, we are preparing for our end semester exam. Uh, at that time, college giving us uh, exam leave. That is called as PL. Uh, at, at, at this time, we are uh, we are going to night study at same DY Polytechnic group, which college name is DY Patil Medical College, Kolhapur. Uh, I know that day is Amavasya, and our guard told us don't go at don't cross one lobby.
there is a 4-story building, and we are studying at fourth floor seminar hall. Uh, at that time, after 12 o'clock, don't cross one lobby. Uh, then we all friends said, okay, we are not crossing this lobby. Uh, but we are very curious. What is behind this lobby? So we are going there and just listen. That day, we listen one sound, chum chum chum. After that, one small child also crying. One of my friend got How, how the behosh child hota was tha. crying? Hello, How the child was crying? Like what type of voice? just a little bit small child. I think 1 month, 1 month child. The voice is like that, like this. Then we are leave this place that time. Uh, Tomorrow we all get fueled. After that, we met this guard. He told us previously this is mortuary house, and few years more than 10 years ago, one pregnant uh, uh, one pregnant lady died during the uh, what you can say delivery. So this is my experience, and I experienced this. Okay, Gajanan, whenever you are sharing your experience, at that time you need to use either you can use present perfect tense or simple past tense. Okay. Okay. The tense was totally incorrect when you were Yes, describing the yes, ma'am. scenario. Actually, as I already told you, I skipped that 10, Okay, 10. okay, yeah, yeah, yeah. Uh, Actually, But after we can do one thing, we can revise. Okay, 1 2 days we can revise tenses. yes, yes, but ma'am. it Actually, was an interesting story. I think the real Yeah. story. but this is not the one. Actually, I experienced another one also. Another You one? can Oh my you God. can share you can share that one also. Actually, this area is called as ghost area in Kolhapur. Why ghosts are behind you only? Tell me. No, 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 ma'am. Actually, I experienced. That's why before that I can't believe on uh, ghost. You can share Yes, that one yes. also. Yeah, yeah. Uh, After fear, I have completed after 2 years. We are coming at third year. My friend then same that day is I think Purnima. Me, my friend, and my another friend is Akshay Patil. We are going to collect Pokemon. That time Pokemon Go game is on trend. So we are going to collect Pokemons, and at the same time we are going to Smashan. My friend, मैं आपको हिंदी में बताऊँ चलो. उस समय क्या हुआ कि हम चार चार जन थे, और उधर एक पंच घाटी करके है कोल्हापुर में, जहाँ पे एक्चुअली एक टेम्पल भी है और स्मशान भूमि भी है. तो वहां पे रात को जाने के लिए मना था, पर उस दिन क्या था कि ऐसे पूर्णिमा थी तो ऐसा सब दिखता था अच्छे से. तो हम लोग गए. लगभग रात के 1:30 बज गए थे. 1:30 बज गए थे और हम लोग उधर गए, पोकेमोन कलेक्ट कर रहे थे मोबाइल पे. करते करते हम लोग पहुंच गए. पहुंचने के बाद मेरा जो दोस्त था अक्षय पाटिल करके, वो सीधा ऊपर पाई पाव करके पेड़ के ऊपर चढ़ा था. लगभग 10 फीट चढ़ा था. फिर वो एकदम रोने लगा, वो कुछ भी बात करने लगा. मैं जाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा नहीं, तुम लोगों के साथ आऊंगा नहीं. वो नीचे ही नहीं आ रहा था. फिर उधर एक कोल्हापुर में एक दरगाह है, दरगाह. वहां से एक फकीर को लेके आए थे हम लोग. फिर वो फकीर ने वो उनका वो
मोर पंख वाला वो झाड़ू मारा, कुछ मंत्र फूके, फिर वो नीचे आ गया। नीचे आने के बाद वो उसको कुछ याद नहीं था उसने क्या किया था एक्टिविटी, पर वो एक वास्ट एक्सपीरियंस था हमारे लिए। तब से मैं ना एक घोस्ट और ये नेगेटिव एनर्जी के ऊपर ना बिलीव रखता हूँ। Okay, पर interesting. ये मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस किया हुआ स्टोरी है। ऐसा स्टोरी तो नहीं है पर रियल एक्सपीरियंस है। Actually, experiences make your beliefs or हाँ, belief इसके system पहले मैं stronger. तो कुछ ऐसा ये नहीं कर रहा। हम लोगों ने जब उधर वो प्रेग्नेंट लेडी वाला भी जब वो एक्सपीरियंस किया था ना, तब भी हमको इतना बिलीव नहीं था। पर ये वाला जो स्टोरी हुआ ना, हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ ना, इसके बाद तो हम लोग पूरा ऐसा, मैं तो मानता हूँ, कोई माने या ना माने। Okay, let's see. Thank you, Gajanan ji, for sharing all Yes, the ma'am. stories. Bro, lobby means क्या bro? Hmm? Lobby, अरे lobby, कॉरिडोर lobby means कॉरिडोर कॉरिडोर लॉबी। corridor. Okay, okay, okay. Okay, so Balbi, do you have any experiences such kind of? Ma'am, actually, I think I have a lot of experience in these things. When I was in fifth class, actually, my cousin sister, I think there was a medical problem in her. But there was no diagnosis for that. She remained ill for like several years from like last 3 years when I was in fifth class. So, when they consulted all the doctors, but there was no diagnosis, no treatment from them. Then they consulted we can say fakir, peer type, I think. Then when they consulted them, they told that she has a she what do we say, like atma ko soul, like she has covered with a ill soul. So when cousin sister came to our house, and we called that fakir at 8 p.m. Like he came to our house, and he started some doing like mantras, doing some practices on my cousin sister, and we all were there, like my brother, my mother, my cousin sister's mother, and my mamu. We were total 8 to 9 people there. And when he started doing these practices, doing mantras, starting some prayers, and from my cousin sister, there was a there was a there was a voice coming from our cousin sister, but it wasn't the voice of my cousin sister, it was someone else. She told that I am a lady who died, I think 15 to 20 years ago. Like she was, I think she died at the age of, I think, 70. She died at the age of 70. And when they ask her lot of questions, like why did you came to her, and why do you do why you are like why you are creating so much like nuisance in her house. She answered so many questions. I don't know why she why she came in her body, but she answered so many questions. Whatever, like in future also she answered. My mamu questioned her lot of questions about her marriage, about her child. We also questioned like what was done in the past, who did this. And she answered lot of answered lot of questions. And after this scenario, at last she, like the fakir who was fakir told her that now you have to leave this body, because she's going to marry it, and it will create some nuisance situation in their house. Initially she started avoiding her, she started to create arguments with her. When the fakir started doing some prayers, like some mantras, then at last she accepted. Okay, I'm going to leave her, and I'm but how, he proposed a condition. If you are going to donate a golden ring,
in Golden Temple, Amritsar, then I'm going to leave her. I will leave, like, I'm going to leave the body. So when, like, then after this, after the situation, after, like, after 2 to 3 days, when they did all, like, when they did the payment and after for the golden ring, and my mamu took my cousin sister to their original house, like, to their district. And during the journey, like, after half an hour, she stopped the car. Like, she told my cousin sister, told my mamu, please stop the car, like, I have some nausea type or vomiting type. And she stopped he stopped the car, and my cousin sister, like, opened the door. And there was a sudden change on her face, like, her color change, her voice change, because the soul left the body. So when my mom came to our house, he told my, like, nani, he told my mother that, like, this was a scenario, this happened during our journey, and now she's fine. I think this was one experience which I experienced during my childhood in fifth class. Also, when I was in my final year, like, my examination was going on, and I was in my native village, like, in Jammu, in Kashmir. And during that period, what happened there, there was a sudden kind of death occurred in a house. uh, a lady died in her kitchen. I think she was died, she was died before 2 days, and no one, like, noticed that she is there while she is. And after they opened the door after 2 days, like, there was foul smelling coming from the kitchen. So when they noticed that she died, I think she died before 2 days. Like, there was blood clotting there was foul smell coming from the kitchen. And when they did the cremation for that lady, uh after the cremation, during that night, during that night, I was studying at 3:30 a.m. Like, I was studying at 3:30 a.m., and it was the season of, like, summer. And I have opened the, like, windows, and they were open because the temperature was high, and the time was 3:30. And what happened there, like, there was lot of noises coming, and it was just close to my house, like, just 15 to 30 meters. And the dogs, like, I think dozens of dogs came to the area, and they were just barking. But there was, like, what I can say, like, different kind of noises coming from that area, because they were the died house, like, the lady's house who was died. It was close to that area, and there was, like, different noises coming from it was for about 15 minutes, these voices. So I think I have these two experiences. But actually, I didn't understand, like, I have only experiences, but I don't know I believe in these, like, things or not, because I usually go to Gurdwara at 2 a.m. I go at 3 a.m., like, 1:50 a.m., like, all the time in the early morning. But I had never seen, like, such, like, soul or something, like any kind of ghost. So these are two things, but don't have the clarity between those things. But I have experienced these two things. But Balvir Paji, this is energy. As we know, Sorry, law of conservation of energy. What it can say? Energy can neither be created nor be destroyed. One form of energy sorry. can convert into another form. Actually, I am unable to hear you. Can you repeat? Actually, we know law of conservation of energy. Energy Yeah. can neither be created nor be destroyed. One form of Yeah. energy can be to another. Yeah. Yeah. I know. बेसिकली क्या होता है, ऐसी एनर्जी रहती है, बेसिकली इनमें से कुछ निकल जाती है उसी टाइम, और कुछ लोग जब मर जाते हैं ना, वो टाइम ही खराब रहता है। एज पर अवर एस्ट्रोलॉजी अगर आप मानते होंगे या कुछ, तो वो टाइम पे वो लोग ना, उनको मुक्ति नहीं मिलती, तो वो लोग घूमते रहते हैं। पर मैं भी एक्चुअली ना, ये होता है, जैसे हम लोग भगवान रहते हैं ना, वही शैतान रहते हैं, प्रेत रहते हैं, चुड़ैले रहते हैं, तो ये सब हम्म। तो है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो करेक्ट टाइम आएगा ना, तो हमको भी दिख जाएगा वो।
Yes, actually, ma'am, there was a lot of like these things happened in our village. Actually, a man died in an accident. He was died, I think, 20 to 25 years ago, and like last year there was a lady going through that area, like going to her in-laws house, like in the early morning, like 2 to 3 a.m. And that was the time when she captured her. Like she fall ill, like for about 6 months, and they consulted a lot of doctors, cardiologists, neurologists, but no treatment was done. Then after they consult like these fakirs type religious preachers, and they got to know that there is a ill soul, like the man who was died like 25 years ago, has like engulfed her or covered her, is in her body. So but at last she was recovered, but I think it took a lot of time. And he accepted that I am in her body. What was done when I gone in her body, there are a lot of things. Her body was physically changed, also her color was changed, but there were a lot of scenarios in our college which was happened. Okay. Yes, yes. Badru Bhai. I have Thanks some for kind of opinion on it, but I will share it later. We Let's can see share, what others because are. I think Hmm. it's interesting. I think it's a natural or real type thing that we are Correct. experiencing. Correct. Okay, Nanav. Yes, ma'am. Actually, uh, I have not believed on, never believed on ghost. Actually, I have not experienced You these need things. not to experience. Do you have any opinion on that or not? Actually, ma'am, I have not experienced for these things. Actually, I have heard these things, but I have not experienced till now. You have fear of ghosts. No, no, ma'am, I'm not on. You don't have No, fear. no, no. Okay. Okay, let's see. I believe on God, but not believe on ghost. Okay. Yes, So do you want to add up anything or that much only you want to say? that is. Okay, no issue. Thank you, Nana. Rinku, Yes, ma'am. those who are speaking, no, kindly switch on your camera at the time of speaking. Then after that, whatever you want to do, but at the time of speaking, at least switch on your camera. Good morning, ma'am. Ma'am, actually, I believe that positive energy is here, so negative energy is also here, and it is a role of ghost. It is a energy, negative energy. I think in my life, 2011, in my experience was my mother admit in hospital, so some surgical operation, and one day I think 12 or 1 a.m. In early morning, my mother my mother was going washroom, and after that after come back in room, she was totally body language was changed, and after few minutes she was senseless. I was calling a doctor, and doctor was check my mom. After check, doctor was told me that my mom is not here. So my mind is totally upset, and mm, I and my brother, me and my brother,
Yes. What? Died? Hmm. He Yeah, died? yeah. Doctor told that my mom is not That he here. is no more. No more. Yes. And this time, me and my brother is only in hospital, and I am. I think I am 12 class on this time. So after few minutes, in this time I am not crying because my cousin brother. Uh, I think that he was upset because uh, only me and my brother. So to I think all time I believe God, and 100% believe God. So that time I was thought no, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है. So totally few minutes after my mind work, I was call my father, and totally scenarios told them, and my father, I was coming, and but but my father is for 60 kilometer डिस्टेंस, उतने दूर थे, उनको आने में 1 घंटा लगता. देन देन व्हाट कैन आई डू? I think what can I do? Then after that uh, my mind, डॉक्टर से मैंने बोला प्लीज एक बार और चेक किए, रिपीट प्लीज. So a nurse told that his sister mind, मतलब प्रेशर, ये सारा सिचुएशन देख के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, सो एक बात सुन लीजिए. देन डॉक्टर वाज चेक अगेन, एंड after few minutes doctors are some मतलब वो डिस्टर्ब थे कि वो हो क्या रहा है, एंड वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे. एंड in my hospital room, nearest some Muslim person also admit uh, with child. So I was मैंने उनको बुलाया, एंड वो सम मंत्र वगैरह थोड़ा बहुत, वो नॉर्मल पर्सन, ही वाज नॉर्मल पर्सन. सो वो नॉर्मली वो उसको उनको मेरी मम्मी को थोड़ा सा देखे, एंड after some time like 15 minutes my mom is uh, वो उठ गई, and Cheerlead. what मैं Okay, okay, go ahead. कोई बात नहीं, हाँ, continue. एंड वो जाग गई, एंड वो फर्स्ट मुझे देख रही थी, एंड शी वाज फर्स्ट वर्ड इज माँ, only माँ. And 2 to 3 days only one word use ma, only ma word. And ये आपकी माँ बोल रही थी? what? ये आपकी माँ बोल रही थी? मतलब आपकी हाँ, माँ बोल रही थी? माँ, अच्छा, हाँ. किसको बोल रही थी वो माँ? I don't know, but मैं जो कुछ भी पूछ रही हूँ, answer that only ma word. Okay, okay. 3 days. After 3 hours, my father was coming, and my elder brother is also coming, because in this time is very critical. So everyone is here. Yeah, and and
my mommy suggest me that some wo mantra vantra baba like that. So then I was going this person and told every story, and he was told me that it is a negative energy. So my mom was very weak in this time. सो वो जो भी कुछ प्रोसेस होगा वो झेल नहीं पाएंगे. सो आपको या कोई अदर पर्सन को उस चीज को लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ उन लोगों का था. तो उनके सारे प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए मैंने बोला मैं एग्री हूँ अपने ऊपर करने को. तो उन्होंने अप्लाई किया एंड after that my mom was okay, and this time is totally okay. Healthy. But this this is the इस घटना के बाद जो कुछ भी मम्मी के साथ होता है, लाइक सर दर्द हो या बुखार हो, whatever, मैं इतनी दूर होने के बाद भी मुझे वो चीज इफेक्ट करता है. लाइक मुझे बिना फोन किए या बिना किसी के पता होते हुए भी मुझे पता हो जाता है उसे वो तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो चीजें मेरे साथ भी होने लगती है. तो दैट द टाइम, मतलब आपकी मम्मा को अगर पेन होगा तो आपको भी पेन होगा? यस, आफ्टर फ्यू आवर I feel that You experience that there is some kind of pain. या सो तो मुझे जब उसने क्या किया था, लाइक जो आप बोल रहे हो कि जो भी बाबा था उसने कुछ प्रोसेस किया था आपके ऊपर, वो क्या था हाँ लाइक? सब, लाइक मंत्र वंत्र और कुछ कुछ होता है, वो पता नहीं, नहीं. उसमें क्या था? कुछ बुरी आत्मा आ गई थी आपकी मम्मा के अंदर कि किसी ने आई कुछ डोंट लाइक किया? वो मतलब वो कुछ ऐसा जैसे आपने एक्सपीरियंस किया कि वो कुछ बोल रही थी, बट मेरी हम्म मामा हम्म कुछ हम्म। नहीं बोल रही थी. वो बस आई और वो सी वो सेंसलेस एकदम, मतलब वो कुछ था ही नहीं. डॉक्टर भी बोल दिए नहीं है वो अभी. तो इस एक्सपीरियंस से मुझे ये समझ में आया कि if you are believe in God, that means you are get positive energy. एंड बट ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव नहीं है, पर आप इसको ऑब्जर्व There करते is हैं. also a negative energy, but if you have a 7:26. like Today's foolproof topic is believe on God, because we ghosts. don't हम्म, believe God, we like we Yeah. don't have full heart believe on, because हम्म, sometimes we go to the Gurdwara and sometimes we go to the other side. हम्म, Sometimes we हम्म. go to the mandir and sometimes we go to the some kind Baba or human being. There is no full. एंड एंड इन माय नेचर जरूरी नहीं है कि भगवान या पॉजिटिव एनर्जी के लिए मंदिर के हो. मैं ऑल टाइम मैं उनको याद करती. जब भी मेरा माइंड काम से हटके कुछ करते हैं तो हम उस चीज को कंटिन्यूअसली करते रहते हैं. सो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप अगर घोस्ट को मानते हैं, दैट मीन्स दैट इज अ नेगेटिव एनर्जी टोटली. वो तब तक आपको हार्म नहीं करेगा जब तक आप उस पे 100% बिलीव नहीं करेंगे. और मेरी मम्मा इसलिए वापस आई क्योंकि मैं पॉजिटिव पे बिलीव करती थी. मुझे ऐसा लगता है. Okay. So first of all, if I talk about this English, that was you need to use subject plus verb to, but everywhere you are adding was. ठीक है, subject plus verb to के बीच में आप was add कर रहे थे, ये English word. And whatever I think I'm telling But that you are talking about. Hmm. but it was 10 out of 10 for the like real story. It was a Yeah. very interesting story. Yeah. Actually, energy, we are talking about only positive and negative energy. So that is not the case. Energy means as we are talking now, right? That is also energy. You have to share your experience, like what kind of experience you I have. I'm sharing that what is my thought behind it. I haven't experienced because the thing is whatever is there in our surrounding, our thought even that is also energy. So there is not only ki positive and negative energy, God and evil. That is not the case. Everything in our surrounding is energy. Nature is an energy, right? So first we need to get clear about that thought. So even if we are thinking about which doesn't exist, still it is an energy.
because it is in our thought, right? So no one can deny that that is not that can't be here. Okay. So just forget about that, that we have negative and positive. So everything is energy, whatever you believe, that is also a kind of energy. So for example, if many of us, we have seen, we say, we claim that we have experienced God energy, right? We have seen God. So you can't find anyone who don't believe in God, but that person has experienced that a person has experienced in his life a, a god energy. We can't say that. In the same way, those who don't believe in ghost, that person can't even experience that ghost. So it's all about our belief system, because whatever. Actually, it's Hmm. like if it is the scenario, then it's a just if you like if I believe in God, okay, then when I do the like when I do my prayer, I will get some feeling like I will get the aura around my side. Exactly, exactly. And if I think that I'm going to that area, I think there's some kind of ghost there, then I will also get the feeling of ghost. Yeah, yeah, This is because all you, like this is but I just but I have experienced like these real things. yeah, Like that's what I'm saying. we Ki just it is we just not talk a, about thoughts. yeah, no, It is no. a different. I'm These not two saying things are that. different. For example, some things are there. For example, few things are there which you are unaware inside your. You know, I'm not talking about. I'm not trying to scientifically justify it. Okay, I'm just sharing whatever I think, and you can also share your opinion about it. That something is there which we are unaware. Okay, from since our childhood, or it is in our we haven't maybe experienced or have listened to anything in our childhood, but we have that in our DNA also, right? Because from our parents or anyone else. So whatever experience we have, no, sometimes we are unaware of it, but still it is in there in our subconscious mind. Maybe in childhood at the age of 5 you experience something, right? So we think that okay, we haven't seen that, we can't even remember few of the facts. कुछ ऐसे, ओके लेट मी टेल इन हिंदी ओनली, ठीक है? तो कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो हमने देखा है चाइल्डहुड में, ठीक है, बट वी कांट रिमेम्बर इट इवन, हम इसको याद भी नहीं, हम मे बी इट कैन बी अ मूवी ऑल्सो, लेकिन वो आपके ऊपर इतना ज्यादा उस टाइम पे इफेक्ट किया है, दैट्स व्हाई इट इज सेड नो कि बच्चों को हॉरर मूवी या ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहिए टिल द एज ऑफ 7 के एज तक। बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर होता रहता है, जो भी वो आसपास देखते हैं फील करते हैं, राइट? सो नो वन इज डिनाइंग दैट गोस्ट इज नॉट देयर और गॉड इज नॉट देयर। ओके, बट द थिंग इज कि ये कैसे आपके दिमाग में रह जाता है, एंड यू विल हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस because you think that you don't believe, but it is in your mind already, because you have you are not aware of that fact that you believe in this kind of things। ठीक है? तो अगर आप एक पर्सन भी ऐसा ढूंढ लो जो कि एक्चुअल में, दैट पर्सन इज नॉट ओनली टेलिंग, एक्चुअल में जो पर्सन बिलीव नहीं करता है गोस्ट में, एंड दैट पर्सन हैज एक्सपीरियंस्ड इट, यू कांट हाँ, फाइंड दैट पर्सन। मुझे एक जैसे बात भी, है। से इन अ सेम वे गॉड भी, एक पर्सन ऐसा नहीं है कि कोई गॉड में बिलीव नहीं करता, उन्होंने फील किया है गॉड गॉड ऐसा, मे बी मुंह पे ऐसे बोले कि अरे मैं तो भगवान नहीं मानता, लेकिन ठीक मानता है, लाइक दैट। ठीक है? तो ये आई वट एवर आई बिलीव दैट अगर आप बिलीव करते हो देन ओनली विल गेट टू सी, अदरवाइज नॉट। See, in my Actually, childhood, sharing one story of mine. In my childhood, जो मेरे मतलब शादी से पहले जो घर था, वो हमने टोटली सेल कर दिया बिकॉज ऑफ दिस इशू ओनली। ठीक है? कि वहाँ पे there was a lot of yes, yes, हाँ, okay. हाँ, हाँ, होता था, मतलब आवाज आती थी जब मैं हम छोटे थे, एंड एवरीवन यूज्ड टू बिलीव। एक दिन क्या हुआ था, मेरे पापा का जो चश्मा था वो ऐसे टूट के ना टेबल पे ऊपर रखा था। ठीक है? तो जब जो भी घर में अकेला रहता था, वो मतलब फील करता था कुछ, ठीक तो है। पापा का एक के बाद एक के बाद हेमरेज होता ही रहता था, लाइक दैट एवरीवन यूज्ड टू अटेम्प्ट सुसाइड एंड दिस काइंड ऑफ मेंटल स्टेट वाज देयर। सो माय मदर रियलाइज्ड एंड शी सोल्ड द हाउस। ठीक है? हाउस चेंज कर लिया हमने, और हमको पता चला कि ये जो किसी ने वहां पे सुसाइड किया था, मतलब हमारे पहले जो थे, उन्होंने आग लगा के खुद के ऊपर सुसाइड किया था।
तो ये जो पॉइंट हमारे दिमाग में घुस गया ना पहले से कि सुसाइड करके यहाँ पे मरा है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट हो गया कि इमेज समथिंग बन इज गई देयर, सबसे। या इमेज हो, मतलब वी क्रिएट हो स्टार्टेड गई। मैनिफेस्टिंग इट। तो हाँ। हमने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी काइंड ऑफ अवेयरनेस, कि हमें पता नहीं था कि वी वेर अट्रैक्टिंग इट। ठीक है, तो ये सच में हो रहा था, एंड वी कांट से कि इट इज नॉट रियलिटी, ये हो रहा था। Okay, and after that, when I started watching Hollywood movies, horror movies, and everything, I have some kind of awareness about mental images and everything. थोड़ा बहुत spirituality, science, and everything. When I mixed up, at that time I got to know about it. And right now I don't have any kind of. I stay alone in my house. Lights are It off. depends on our mentality. Like, If you believe, the main thing is if you believe in your subconscious mind, even not with conscious mind, I'm talking about, ma'am, then you will attract it. yes, no, I will not deny these things, but ma'am, in our village, because I think आपको पता ही होगा village में क्या ही scene होता है, like Hmm. in our village there's a house in which मतलब अच्छी family थी वहाँ पे, तो like there was a lady who got married, but like I don't know, due to some reasons he got the divorce because Hmm. she got some like mental disturbances, she was not mentally fit. देन तो उसको वापस ही अपने मतलब मम्मी पापा ने घर पे ही रखा था, तो शी वाज मेंटली फिट, ही वाज डूइंग सम लाइक ब्रेकिंग द डोर समथिंग, लाइक गालियां देती थी, तो व्हाट हर मदर फादर डिड, शी लॉक्ड हर इन द रूम like for years, and she with time she like she weakened and got some physical issues, and after few years she died, like she died in that room after after the cremation. Hmm. After like 1 to 2 years, uh, there was ghost type feeling in the house. Hmm. Yeah. After like with when the time passed, uh, when her matlab when their like sons got married, uh, the wife of the younger brother, so younger brother, yeah, she catch fire, like वो उसने पता नहीं, हमें भी नहीं पता अभी तक कि उसको आग लगी थी या लगाई गई थी, एंड शी डाइड। मतलब ये क्लियर नहीं था कि उसको कैसे लगी आग, मतलब किसी को भी नहीं पता, लेकिन सारे ये बोलते थे कि वहां पे था, देयर वाज सम फीलिंग ऑफ दिस एक्सपीरियंस्ड गोस्ट टाइप फीलिंग, तो उसकी डेथ होगी, इट वाज एन एक्सीडेंट। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब दे सोल्ड द हाउस एंड चेंज देयर हाउस, बायड अ न्यू लैंड, उन्होंने नए से रिकंस्ट्रक्शन की, दोबारा एक नया हाउस बिल्ड किया, और वो जो उनका घर है अभी, लाइक उन्होंने वो उस पे लाइक सोल्ड भी नहीं किया, वो रेंट पे दे देते हैं, उसके आसपास कोई नहीं रहता, उन्होंने उन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया, लाइक इट वाज अ गुड हाउस, लाइक 2 स्टोरी बिल्डिंग, सो नाइस हाउस, बट लेकिन उन्हें इसी वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, बट इट्स अ फैक्ट कि वहां पे था, वहां पे ये चीजें हैं, एक्चुअली लाइक ये भी क्या होता है ना, जब एनर्जी, यू नो दैट एनर्जी कैन मूव एनीवेयर, राइट? तो इट इज नॉट अबाउट हाउस ऑल्सो, इफ यू लिव दिस हाउस नो वी मैम, कैन। बट एक्चुअली द केस इन दिस सिनेरियो वाज कि जो वो एक्चुअली वो फीमेल थी, लाइक उसने जब उसकी शादी हुई थी, तो फिर कुछ हुआ था, लाइक उससे समथिंग ड्यूरिंग ड्यूरिंग मैरिज, लाइक मेहंदी, व्हेन देयर वाज मेहंदी समथिंग, मुझे पता नहीं, सुना ही था मैंने, क्योंकि काफी टाइम की बात है, तो ड्यूरिंग मैरिज उसमें कुछ लाइक उसी टाइम उसको कुछ हुआ था, लाइक मुझे नहीं पता कि गोस्ट ऐसा कुछ था, लेकिन वो बीमार पड़ी थी उस टाइम। तो आफ्टर मैरिज she was fallen ill, weakened her body, there was some physical and mental issues, तो उन्होंने उसको लाइक डाइवोर्स ही दे दिया, तो उनको वापस ले आए। देन एग्जैक्टली। इवेंचुअली उनको जब उसकी डेथ हुई, तो फिर ये केसेस स्टार्ट हुए, एंड लाइक वो हमारे पूरे गांव में ये लाइक सबको ही पता है, लेकिन अब ये है कि पता भी है सबको, अब ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ वो इसी पे डिपेंड हो जाएंगे यार, उधर नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, अब लाइक हम तो नॉर्मली है सारे, लेकिन ये चीजें होती है। अब ये है कि अगर हम उन्हें नहीं कर रहे कुछ, तो हमें कोई क्यों करेगा, लाइक वी आर ऑन द ओन पाथ। नहीं, सी देखो, कुछ कुछ जगह होते हैं ना जहाँ पे इफ यू गो टू टेम्पल, राइट? तो टेम्पल में क्या होता है, एज वी नो कि पॉजिटिव भगवान हर पॉजिटिव जगह चीज। पे होता है, हाँ लेकिन जी, हाँ जी। टेम्पल पे क्यों जाया जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो वाइब्रेशन होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन पॉजिटिव होता है। होती है, एक तरह की देखो अब चीजें होती हैं कुछ, लाइक हम्म। हम क्यों साफ सफाई रखते हैं, हम्म। लाइक साफ सफाई अगर घर में रखती हैं तो एक तरह का लाइक डस्ट नहीं होती, ठीक है, कीड़े मकोड़े नहीं आते,
अब आप देखो जहाँ पे when where there is lot of dust or smoke or like garbage type, वहीं पे like कीड़े मकोड़े या जो भी मॉस्किटो इंसेक्ट्स होते हैं, there is a difference. जहाँ पे गंदगी एग्जैक्टली। होगी वहाँ पे गंदी चीजें होंगी, और जहाँ पे और साफ एक सफाई होगी और वहाँ चीज पे है अच्छी कि चीजें होंगी. एक्चुअली एवरीथिंग इज इन आवर सराउंडिंग ऑल्सो, वॉट एवर यू कैन इमेजिन, राइट, दैट इज देयर इन आवर सराउंडिंग एज एनर्जी, एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो भी हम इमेजिन कर सकते हैं वही हमारे आसपास है। अगर आप इमेजिन करो कि कल मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, एंड विथ बिलीव, इफ यू नो इट, राइट, कि मैं बनने Like वाला there हूँ, are तो when दैट there are दैट इज lot of ऑल्सो देयर। there are यू lot of stories from my side. एक्चुअली मुझे एक स्टक आ रही है माइंड में रिसेंटली, मतलब कुछ महीने पहले ही मेरी भाभी बीमार हुई थी. मतलब एक्चुअली रियल भाभी लेकिन मेरी कजन की है. तो अब मैं वहां पे था तो लाइक जब भी वो लाइक उनको चक्कर आते थे, शी फेंट्स, लाइक बहुत बार हुआ ऐसा. तो मैं चेक करने जाता था तो ठीक होता था, जो भी पल्स लाइक बीपी शीपी चेक करता था ठीक था. जब लेकिन बार बार होने लगा, बार बार होने लगा, फिर उन्होंने ये कंसल्ट किया लाइक जो भी. तो फिर लाइक एक कुछ टाइम ठीक हुए तो एक डेढ़ महीना फिर से जब वो बीमार हुई, शाम का टाइम था, 12 बजे थे. तो वो अपने घर थे उस टाइम. तो कजन लाइक उन्होंने मुझे कॉल की, तो मुझे वहां पे लाइक मैं मशीन लेके गया, जो भी इंस्ट्रूमेंट थे. तो मैं जब गया तो उसने मुझे ऐसा बोला कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं. लाइक उसने लाइक शी जस्ट गिव मी हिंट दैट आई डोंट हैव एनी मेडिकल प्रॉब्लम. ओके. तो आफ्टर लाइक 10 to 15 मिनट्स वी हैड सम लाइक क्या बोलते हैं उसको, मंत्र कुछ चीजें थी, हमने उसको वो किया. तो जब हम दूसरे कमरे में उसको शिफ्ट किया हमने, शी क्राइड, शी क्राइड एंड शी जस्ट स्पोक वर्ड लाइक, उसने ये बोला कि मैम आई एम ऑडिबल. हाँ जी मैम, वो यस वही यस कह रही यस थी. यस, यू आर भाई ऑडिबल. भाई, वो सिर्फ ये बोल रही थी कि वाई यू ऑफर्ड मी नॉन वेज, आई हैव नॉट टू ईट नॉन वेज, वाई यू ऑफर्ड मी नॉन वेज. उसने नॉन वेज खाया था कुछ टाइम पहले, शायद उसको नहीं खाना था वो. तो उसने ये चीजें बोली थी और रो के बोल रही थी, मतलब शी वॉज क्राइंग, और रात का टाइम था. तो हमें वो जो जो उसकी जो जैसे उसने बोला वो डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट था. नॉर्मली वो बिल्कुल डिफरेंट था, जैसे कोई और बोल रहा है. तो फिर लाइक हमने फिर कंसल्ट की काफी चीजें, तो उसको काफी चीजें थी. लाइक वो बीमार थी, लाइक ही सम गोस्ट इफेक्ट, और काफी होता है ना ब्लैक मैजिक, वो भी करा हुआ था उस पे. तो जिससे वो ठीक नहीं रहती फिर. लेकिन जब हमने काफी टाइम लाइक 4-5 महीने के बाद कंसल्टेशन ली, कुछ आए लाइक बाबा फकीर भाई, उन्होंने ब्लैक मैजिक निकाला वहां से, बहुत सी चीजें निकाली. कुछ चीजें लाइक उस किसी रूम में रखा हुआ था, और उसको वो सपने भी आते थे कि वहां पे है, वहां पे है. लेकिन अब हम तो उसकी नहीं मानते थे, हम लगे शायद ऐसी बीमार है शायद. लेकिन जब वो आया, कोई लाइक प्रीचर था, वो रिलीजियस प्रीचर, तो उसने वो चीजें निकाली ब्लैक मैजिक टाइप. तो आई थिंक ये रिसेंटली है, आई थिंक 2 महीने पहले की बात है ये. तो नहीं नहीं, देयर इज होता सम काइंड ऑफ मतलब ब्लैक मैजिक. रहता है. हाँ जी. एक्चुअली इसमें ना अतृप्त आत्मा की वजह से होता है. जो क्या कुछ होता है? लोग रहते हैं उनका एक जिंदगी में अगर किसी को एक मकान बनाना है, और मकान बनाते बनाते अगर वो मर भी गया ना, तो मकान छोड़ के जाएगा नहीं. अगर उनके बच्चों ने भी बनाया ना, तो उधर ही रहेगा. होता क्या है पता है क्या? वो उधर रहने के बाद उसको पता होता है कि वो सारे लोग उसके ही है. पर हम्म. वो खुद एक प्रेत होने के कारण वो उधर नेगेटिव एनर्जी से क्रिएट करता रहता है. तो नेगेटिव एनर्जी वजह से क्या होता है कि वो घर के लोग बीमार होंगे, लोगों को ऐसा अनईजी फील होगा. ये सब चीजें होती हम्म. रहती है. फिर वो सब शुद्धिकरण करके वो भगाया जाता है उनको उधर से. दैट इज द थिंग, यस. नेगेटिव वाइब्रेशन होता है। एक कंपनी था, एक कंपनी में ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूव्ड है, इट इज ऑल्सो। तो एक कंपनी था, वहां पे ना जो जितने एम्प्लॉयज काम करने जाते, एक फैक्ट्री टाइप था, तो जितने एम्प्लॉयज काम करने जाते थे वो बीमार हो जाते थे, ठीक है। तो एक बार स्टडी किया गया कि क्या होता है कि जो भी जाता है वहां पे बीमार क्यों हो जाता है। तो वो पता चला कि एक वहां पे फैन था जो कि एक साउंड करता था, एंड इट वाज एट रॉन्ग वाइब्रेशन मोड, ठीक है, रॉन्ग वाइब्रेशन में था। तो वो जब फैन चेंज किया गया तो वो ठीक हो गया। तो वाइब्रेशन जो होता है ना, तो उससे बहुत इफेक्ट होता है। तो ये जो गोस्ट वगैरह है जो बोला जाता है, तो बेसिकली उसका ना मैम, आप नेगेटिव। अभी बोल रहे थे कि हाँ। सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो अपना मंदिरों के अंदर रहता है. क्यों पता है रिलीजियस, क्या? रिलीजियस क्योंकि प्लेसेस. मंदिरों के अंदर वाइब्रेशन। एक बड़ा घंटा रहता है. और ये हम्म। साइंटिफिकली प्रूव भी है कि अगर या आप या घंटा बजाओगे वही उसके नीचे वाइब्रेशन है। अगर आप
सर आपका लोगे ना 1 मिनट के लिए जितना वो कंपन है या वाइब्रेशन है, करेक्ट आपको करेक्ट। फीलिंग वो एक अच्छा फील होता है। यस यस यस, उससे बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए हम वैसे करके अंदर जाते हैं, ये भगवान को बुलाने के नहीं नहीं बेसिकली हम लोग भगवान के लिए बुलाने के लिए नहीं है, पर हमको वो घंटा बजने के बाद बिल्कुल हमारा बिल्कुल, हाँ सर जी। पूरा वो बेल के नीचे लाइक रखना मैम, चाहिए। You इफ can आई see शेयर, that. Can you see my phone? I don't know. You can यस see. यस 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 One यस। सर। vibration is always there on my phone. I always listen to it whenever I'm in class or anything मैम ये else. क्या है, ये क्या है? It is kind of a attracts This is abundance. actually this You can told as share in the chat, मैम. one type of medication. Yeah, yeah. 5 to 8 plus 69. Because in class I can't do anything, right? I can't listen to Ma'am, affirmation. you can share the chat. Ma'am, also if I share like from You my can go to Google, you can go to okay, okay, YouTube, and there lots of vibration are there. You can select whatever you need in your life. Love at okay, you want to attract got it. like Ma'am, actually, if abundance. I If you type no abundance, so you'll get all the kind of abundance in okay, your health. no, Ma'am, if I share like from my religious point of view, actually हमारे यहाँ पे क्या होता है? There are lot of weapons like हमारे like गुरुद्वारा में ऐसा कुछ. तो मतलब I think it's the fact that ghosts fear from these Yeah. weapons Okay, because they are made of iron. okay. Sorry to interrupt, Balveer. I need to end the class because it is Arab already tomorrow 8 here. topic is black magic. Tomorrow we'll discuss the same topic. Okay. Okay, okay, thank you, ma'am. So much. Okay. The class is over. How many words did I speak in this class? 2 words hardly. That's okay. But it's okay. I was really tired. Like, I slept late. I had about 5 hours of sleep. So, I was feeling a little down the weather. So, yeah. Yeah, next time I'll be more active. Next day, tomorrow, like I need to make some points. I need to keep a paper and a pen where I can write down the points. Like I can premeditate on it